हेलो गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम टू माय चैनल विद ब्रांड न्यू वीडियो। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका पेन ड्राइव इनक्रिप्टेड और कंप्यूटर में शो नहीं कर रहा है तो कैसे आप उसको रीसेट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले गाइज मैं आपने मेरे कंप्यूटर पे ये पेन ड्राइव इंसर्ट कर रहा हूँ। होल्ड ऑन। देखिए मैंने एक पेन ड्राइव इंसर्ट किया जो इनक्रिप्टेड है। सो आई विल शो इट इज़ 32 GB पेन ड्राइव, 32 GB का है, मगर मेरे पीसी पे ये दिखा नहीं रहा है और नॉट शोइंग। सो लेट्स स्टार्ट टू रीसेट इट। सो फर्स्ट गाइज you need to press on the Windows button and type cmd and you will see command promote। आप देख सकते हैं इधर command promote आया, इसको आप run as administrator। ओके, please run as administrator each। okay, so it's run, ये चालू हो गया। so then please type disk part part, then press enter। disk part टाइप करिए एंड इंटर करिए। then next step is type list स्पेस disk लिस्ट स्पेस डिस्क एंड इंटर करिए। सो देखिए गाइज मेरा 32 GB का पेन ड्राइव इधर दिखा रहा है मगर कंप्यूटर पे नहीं दिखा रहा है, इधर नहीं दिखा रहा है मगर इन कमांड दिखा रहा है। सो इसको हम अब रिस्टोर करेंगे। सो थर्ड स्टेप इज टाइप एस सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट disk 2। then third step is type select disk 2, टाइप करिए select disk 2 एंड इंटर करिए। इधर दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हैं disk 2 is now the selected disk। okay, then type for clean 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 टाइप करिए एंड प्लीज प्रेस द इंटर अगेन। डिस्क पार्ट सक्सीड इन क्लीनिंग द डिस्क, ये भी सक्सीड हुआ। देन नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी करना चाहिए। सो टाइप करिए CREATE क्रिएट स्पेस PARTITION पार्टीशन स्पेस PRIMARY प्राइमरी। देन यू शुड प्रेस इंटर करिए। डिस्क पार्ट सक्सेड इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन। देन अगेन वी नीड टू फॉर्मेट करना चाहिए इस डिस्क को। सो वी नीड टू टाइप फॉर्मेट FORMAT स्पेस FS space FS equal to FAT32 is right one। okay, so FAT32 again space quick QUICK quick। so फॉर्मेट करने के लिए टाइप करिए फॉर्मेट स्पेस FS इक्वल टू FAT32 एंड क्विक एंड प्रेस द इंटर करिए। okay, percentage 100% completed, you can see the format is successful, 100% completed दिखा रहा है। so now again we need to active the flash drive। so for that we need to type active active टाइप करिए एंड प्रेस द इंटर। डिस्क पार्ट मार्क द करंट पोजिशन एज एक्टिव। okay, again assign, last one is you need to press assign ASSIGN assign, then press enter। now disk part successfully assign the drive later or mount later। so I think it is reactive। so let's see। now देखिए मेरा ड्राइव इधर 32 GB का ड्राइव दिखा रहा है।
So guys, this is the process how you can restore the your encrypted or not showing pen drive in your PC, laptop or etc. So if you like my video, please like and subscribe my channel. Like करिए, subscribe करिए and comment करिए in the below comment box for next video or what topic you want to see, in which topic you want to see the video. So thank you guys, let's see on next video.